Good morning, students. Today we will discuss about the air masses and the fronts. Air masses and fronts. First of all, here, what is air masses? What is air masses? Here, the large wide region when the air remains over a homogeneous region, that large wide region for comparatively long time here the time period is long time, it acquires the characteristics of the area. It acquires this air acquired the characteristics of the this region, and the homogeneous are कैन बी आइदर वेस्ट ओशियन, या तो क्या होगा वो ओशियन, या क्या होगा द पार्ट ऑफ द प्लेन्स. प्लेन मीन्स हियर द लैंड रीजन. Plain regions, the air having distinctive characteristics in terms of temperature and the humidity. And here the temperature and the humidity is equal for the long time period. It is known as air masses. What here the wide large region that is called here the called homogeneous region, and these large region have the characteristics. क्या करता है absorb gain the characteristics of this region. जिस रीजन पे है उसकी characteristics को एयर क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब करती है या एक्वायर्स करती है, एक्वायर्स द characteristics ऑफ द रीजन. एंड दिस होमोजेनियस रीजन, वो रीजन कैसा होता है, या तो ओशियनिक पार्ट होगा या लैंड पार्ट में प्लेन पार्ट होगा. एंड एयर हैविंग करेक्टरिस्टिटीज, और करेक्टरिस्टिटी क्या होगी इसके एयर की, टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी. सेम टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी, लॉन्ग टाइम पीरियड तक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या रहेगी. जैसे कि क्या हो रहा है वार्म, तो वार्म करंट, वार्म एयर मासेस. देन हियर द कोल्ड, देन कोल्ड एयर मासेस. क्लियर, दैट इज कॉल्ड द एयर मासेस. And here the regions where the air masses develop, yeah, the air masses are classified according to the source regions, and there are the five major source region. First here the warm tropical and subtropical oceans. So here total ocean region of the warm and the tropical and subtropical oceans. Second is the subtropical hot desert. So hot desert, here the also the plain region of the hot desert, and the relatively cold high latitude oceans. And number 4 is the very cold snow covered continents in high latitudes, and last is permanently ice covered continental in Arctic and the Antarctica. So here totally region, here the land region, plain region, and in also here the oceanic region. For here characteristics, you have the condition, model condition for the development of the air masses. Second is front. So what is front? When two different air masses meet, the boundary zone between them, the boundary where two air masses, like here cold air mass, and here the hot air mass, warm air mass. Then the cold air mass and the warm air mass. Then the region where the cold air mass and the hot air mass meet, this region is known as front. Different type of air masses. Then here the air masses meet, this प्लेस इज नोन एज द फ्रंट. जहां पे एयर मासेस मिलते हैं डिफरेंट टाइप के, दैट इज कौन, और इनका जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है, अपोजिट साइड. जैसे कोल्ड एयर मास का डायरेक्शन ये है और हॉट का क्या है, ये वाला है. देन हियर व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस मीट, the boundary zone between them, that is called the front. Clear? There is a four type of the front: cold front, warm front, stationary front, and occluded front. So first we discuss about the cold front. Different type of air masses, like here the cold wind, like here the hot wind. Cold air masses and hot air masses. So what these are, here the cold air masses is strong. And cold air mass moves towards the hot air mass, and cold is strong. So cold air mass क्या कर रही,
ये जो हॉट एयर मास है उसको ऊपर उठा देती है, अपवर्ड द हॉट एयर मास बाय द कोल्ड एयर मास, और दिस टाइप ऑफ द फ्रंट इज नोन एज द, दिस टाइप ऑफ द फ्रंट इज known as the cold front. This type of the front is known as the cold front. Then cold air mass is strong. And the second condition, warm या hot air masses. Then one air mass, here the cold air mass, and second is here the warm air mass, warm and hot air mass. So what here? Here the warm air mass is strong. Then here the warm air mass is strong. Then what condition? Then warm air mass is strong. Then the warm air mass, warm air mass, here the cold air mass, and this warm air mass is strong, so warm air mass upper side of the hot air mass. जो hot air mass वो क्या करती है, cold air masses के ऊपर चढ़ जाती है. This type of the front is known as the warm front. जब cold air mass क्या कर रही है, hot air mass को अपर उठा देती है, यहाँ पे cold air mass is strong, that is known as the cold front. Then warm, what is warm front? Then hot air mass या warm air mass is strong. Then this warm air mass क्या हो रही है, cold air mass के ऊपर चढ़ जाती है. This condition is known as the warm front. And the stationary front, here the stability. Stationary front, here the stability. यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस नहीं होते. ये जो फ्रंट है वो क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं. फ्रंट क्या हो जाते हैं ना, स्टेबल हो जाते हैं. दिस कंडीशन इज नोन एज द स्टेशनरी फ्रंट. जब ये वाताग, ये जो फ्रंट है स्टेशनरी हो जाते हैं, द स्टेशनरी फ्रंट इज कॉल्ड व्हेन द कोल्ड एंड हॉट एयर मास हैव स्टेबल, टोटल क्या हो जाएंगे, फ्रंट स्टेबल हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी फ्रंट. एंड द लास्ट इज occultated front. Occultated front में क्या हो रहा है, if an air mass is fully lifted above the land surface, इस land surface से क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से अपना contact हट जाता है. Then here the front है, the this type of the front no have the relation या no have the close surface. This type of the known as occluded front. If an air mass, then here the surface here, surface region and air mass is fully lifted. और air mass क्या हो रहा है, जो यहाँ पे air mass है वो क्या हो जाता है, fully lifted upper side, and here the no contact with the land surface. This type of the front is known as the occluded front. And the air mass is useful, front is useful for the cloud formation and rainfall.